गुड इवनिंग एवरीबडी, वेलकम टू द सेशन। आज की जो टॉपिक है वो करंट जो मार्केट का कंडीशन है। एक साइडवेज रेंज में मार्केट है। 200-300 पॉइंट निफ्टी नीचे जाती है, बैंक निफ्टी 700-1000 पॉइंट जाती है, फिर कहीं ना कहीं पुल बैक आ जाता है। पुल बैक के बाद अगेन व्हाट यू आर सीइंग इज अगेन मार्केट गोज अप। आज जैसे गैप अप खुला, फिर क्लोजिंग में थोड़ा ढीला हो गया। So as a trader, given the current market condition or in any market condition, आपको एक डिफाइंड वोलेटिलिटी की रेंज है वो जानना जरूरी है। See, इसको हम डेफिनेट एक मेजर मानते हैं कि ऑन क्या बेसिस पे ऑप्शंस डेटा या तो चार्ट्स डेटा के बेस पे एक रेंज जो कि मैथमेटिकली डिवाइस्ड है। ऐसा नहीं कि मुझे लग रहा है 200-300 पॉइंट की रेंज है, नॉट दैट। What is the math which goes into the inputs which says that this is going to be the range for the market for the day, for the week, and for the month? So if my audio is loud and clear, everybody please give me a yes. Okay. So I have got yes from majority of the participants. And this topic, honestly, you should take notes. When you get the slides, take the printouts. This is something which has to stay with you forever. ये सारे टॉपिक्स है बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस ऑफ ओवर लास्ट सो मेनी इयर्स। ऑन दीज थ्री मेजर्स एक हमें अच्छा मार्केट का एक रेंज डेफिनेशन मिल जाता है। So today's webinar is about volatility measure rules. Let's explore, understand and execute. आज की तारीख है 20 अगस्त and before I start, I'll read out the disclaimer. This is for educational and informational purposes only and does not constitute financial advice. So अभी तो हम regularly मिल रहे हैं, so you all know me. My name is Hitesh Chotalia, and that's briefly my experience over the past 26 years, including stocks, option, commodities, and currencies. आज का जो वेबिनार है उसमें हम देखेंगे स्ट्रैडल प्राइस के बेस पे वीकली और मंथली रेंज कैसे निकालना है। विक्स के बेस पे हम डेली और वीकली रेंज कैसे निकाल सकते हैं मार्केट की। और विक्स वाली तो मैं खुद फॉलो करता हूँ, प्लस स्ट्रैडल प्राइस, उसकी मैं एक्सेल स्प्रेडशीट एक आपको दे दूंगा। और दूसरी है चार्ट डेटा के बेस पे जिसको हम एवरेज ट्रू रेंज बोलते हैं। तो देखिए और भी हो सकती है, बट दीज थ्री आर मेजर स्टडीज which every trader should know when he wants to figure out what's going to be the range for the market. आप बोलोगे रेंज क्यों चाहिए? देखिए मार्केट 3-4 दिन गिरता है तब आपने भी देखा है कि एक उछाल आता है, या 3-4 दिन बढ़ जाता है तो वहां पे एक मार्केट रुक जाता है। ये क्यों रुकता है? बिकॉज कहीं ना कहीं एक वोलेटिलिटी एग्जॉस्शन नीचे ऊपर दोनों तरफ देखने मिलती है। तो ये स्टडीज से हम रेंज डिफाइन करेंगे डेली, वीकली और मंथली। रेंज के बेस पे यू डिसाइड द स्ट्रेटेजी, लोकेशन, एंड whether you decide a credit spread trades, which means either आप कॉल बेच के ऊपर के कॉल ले लो, पुट बेच के नीचे के पुट ले लो, जिसको हम क्रेडिट स्प्रेड्स बोलते हैं, या तो रेशियो कौन से लेवल पे कैसे हमें करना। ऐसा नहीं क्रेडिट स्प्रेड 100 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी का आपने कॉल बेच दिया और उसके 100 पॉइंट ऊपर का कॉल ले लिया और मार्केट 100 पॉइंट ऊपर गया तो आपको पता चला यू आर हैविंग अ बिग M2M लॉसेस एंड यू एग्जिटेड द पोजीशन। डज इट हैपन विद एवरीबॉडी? फॉर दैट, फॉर क्रेडिट स्प्रेड्स हमें जो स्प्रेड्स चाहिए वो वोलेटिलिटी के रेंज के बाहर चाहिए या तो बॉर्डर पे चाहिए। And based on this, you can apply the risk management part. The first is, I will do it with this VIX. Because VIX की मैं spreadsheet भी आपको दे दूंगा. I'll give it to my co-instructor Deepak ji. He will either email to you or send it in your handouts if we have that facility over here, Deepak ji. एक VIX बेक एक्सपेक्टेड रेंज रखने, और ये मेरी पर्सनल स्प्रेडशीट है जो कि मैं आज सबको आपको दे दूंगा. यू कैन स्टार्ट यूजिंग इट. हाउ मेनी ऑफ यू वांट इट? लेट मी नो. कि ऐसा नहीं आपको चाहिए नहीं और मैं जबरदस्ती दे रहा हूँ.
लेट मी सी। ओके, तो इसमें जो येलो कॉलम है ना, वही आपको फिल करने, बाकी ऑटोमेटिक पॉपुलेट हो जाएंगे। सो सो आई विल ओपन माय स्प्रेडशीट। इसमें एक दिन की रेंज क्या है मार्केट की, और एक वीक की रेंज क्या है। सो ये बेस्ड है विक्स और नंबर ऑफ वीक्स और डेज। अभी जाके हम प्लेटफॉर्म पे देखते हैं। सो आई जनरली यूज माय प्लेटफॉर्म विच इज इनक्रेड मनी। लेट मी ओपन यू विक्स, विल डू कंप्लीटली हैंड्स ऑन, आराम से जाएंगे, स्लो एंड स्टेडी, नो रश। इफ आई टाइप विक्स आई गेट माय विक्स। थोड़ा नेट मेरा स्लो है आई गेस। सो आई गॉट माई विक्स। विक्स की अभी वैल्यू कितनी है, 10.75। अभी मुझे देखना है कल का मार्केट का रेंज क्या है। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे हम आज का करके देखते हैं। डज दैट फाइन? सो आज देख सकते हो क्या मार्केट वो हिसाब से बिहेव हुआ जब गैप अप हुआ था तब। इज इट ओके एवरीबॉडी? या तो कल का जो विक्स का क्लोजिंग था, इट वाज 11.32। तो आपको विक्स पे 11.32 लिख देना, दैट्स इट। और हम ये स्क्वायर रूट ऑफ 252 क्यों ले रहे हैं, बिकॉज उतने दिन रहते साल में। और फॉर्मूला है इंडिया विक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 252 विच इज 0.71। आपको कुछ नहीं करना है, और सिर्फ येलो में आपको फिगर्स डालने हैं। सो कल का निफ्टी का क्लोजिंग क्या था वो भी देख लेते हैं। तो कल अगर मैं निफ्टी का क्लोजिंग देखने जाऊं, तो कल निफ्टी का क्लोजिंग था 24078। So I'll just come and fill here 24078. अगर मैं आउटसाइड क्लिक करूंगा तो मुझे एक रेंज मिल गई मार्केट की। आज की जो रेंज थी मार्केट की, एज पर विक्स, जो कि डेली रेंज, वन डे एक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी, वो थी 171 पॉइंट्स की। तो एज पर विक्स मार्केट आज ऊपर में 23,906 जा सकता था, नीचे में, सॉरी, नीचे में 23,906 जा सकता था, ऊपर में 24,250 जा सकता था। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? तो इसमें इनपुट्स में वी आर टेकिंग इंडिया विक्स, और हम 252 का स्क्वायर रूट ले रहे हैं, बिकॉज साल में 252 ट्रेडिंग सेशंस होते। दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग 252। Rama Rao ji says, please give the Wix sheet. I will give it, sir. Absolutely, you can use it for Sensex and Bank Nifty also. It's a India Wix, it's not Nifty Wix. Yeah, but most of we use it for Nifty. Sensex you can use it. So अभी देखते हैं दोनों फिगर्स पे लाइन डाल के। आज पे अपर रेंज थी 24249। So I will go and drop a line at, मैं थोड़ा 15 मिनट चार्ट पे चला जाता हूँ, क्लैरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। सो ऊपर का लेवल था 24249। ओके, सो 24249। सो आज मार्केट ऊपर कहाँ खुला? व्हाट वाज द हाई? डिड एनीबॉडी नोटिस दिस? स्पाइक मारा, गैप अप हुआ, बट कहाँ पर अटका? जहां पे एक वॉलेटिलिटी की रेंज थी। नाउ इट्स मेकिंग सेंस टू यू एवरीबॉडी व्हाई वी यूज दिस टूल्स? गिव मी यस और नो। सी एक साइड मार्केट जाएगा ना, दोनों साइड तो रेंज नहीं आएगा। लोअर रेंज था 23906, 23,
Am I making some mistake? 23906. Okay, this was the close. नीचे में अगर आज मार्केट गैप डाउन होता तो यहां तक जाता. So now you see, based on previous day's close, as per volatility VIX India, this was the range on the upside, this was the range on the downside. दोनों तरफ की रेंज नहीं आती सर, एक तरफ की रेंज आती. Don't you think this was a decent enough a measure for today or any particular day? Give me a yes or a no. Yes. So now how to use it in your trading? When market gapped up over here, आप देख रहे हो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक गैप है, यहाँ पे एक कैंडल है. So this is your resistance. So this resistance and wicks are both matching. So at any point of time, if you are long, what you will do? You will book your profit here. Am I right, friends? Because that's what I'm trading for today. And if you think that market has stretched up too far as per the wicks, you can go short with a stop loss, a short trade also. So this is where if you bought at any point of time, book your profit. Then you use the price action data, which is the supply or resistance. You went short and still you made some money. So how many of you liked it? Give me a yes or a no. This way, based on this spreadsheet, आपको रोज ये रेंज बनानी है. आप सोच रहे हो कि मार्केट और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, बट एज पर विक्स ये मेरी रेंज आ गई थी. कैन इट ब्रेक द रेंज? इट कैन. So but that अगर आप यूज करने लगोगे रेगुलरली वॉचिंग, देन यू विल नो व्हिच आर द डेज इट माइट ब्रेक दैट रेंज बाय वन स्ट्राइक पॉइंट. जब मैं एक स्ट्राइक बोलता हूं तो 50 पॉइंट. बहुत पॉजिटिव है तो विक्स की रेंज निकल सकती है ऊपर. बहुत कुछ नेगेटिव आ गया तो विक्स की रेंज निकल सकती है नीचे में. Am I right? Or on price action, when there is a major trend change on a daily price chart or a breakout, like कोई moving average price cross कर रहा and so on. So now everybody, will you able to figure out on a daily basis what's your range? So Deepak ji, how to give the sheet? I will send it to you. You can send it to all the participants. Okay. So this is what I do on a daily basis. इसके base पे I am also writing a code out there, which at some stage in the morning on the evening sessions, if you come on the YouTube live, I will give it to you. Right? So आपको कुछ नहीं करना, ट्रेडिंग व्यू में अटैच करना, आपकी रेंज खुद ब खुद बन जाएगी. So how many of you want it? Okay, I'll give that code. You can just paste it in the trading view. Now ये तो हमारी रोज की रोज डेली एक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी है. अभी वॉलेटिलिटी के साथ आपको ट्रेड कैसे करना है? What strategies you will do with a stop loss in place as a day trader? Either यहाँ पे आया तो एक तो आपने प्रॉफिट पहले का बुक कर दिया, यू कैन सेल अ फ्यूचर, और you can sell a call, or you can do a bear call spread, or what else you can do? You can buy a put. इतनी चीजें हम यहाँ पे कर सकते हैं as a day trader. But to do this, I need to plan properly. Everybody now clear? So this is where your rules comes into play as a trader. Okay, font थोड़ा छोटा कर दूं. So don't you think this way you'll get a good amount of clarity for your trading? Daily range, we use it for day trade. Fine script I have not prepared. We are working on it. Yeah, this sheet I will give it to you today, sir. Okay. I'll take some of the questions.
Yeah, sheet, I'll give it to you. This is my working sheet. Can we do this on a stock? Answer is no. Stock के लिए और भी है हमारे पास SPK. Ramaji says, sir, please give the pine code 7 in the sheet. We are working on it in the YouTube sessions. I will give it to you. So how many of you think this is a very, very logical way to take a trade? और हायर जो बोलते हैं ना, एक चीज आप दिमाग में डाल दो, ऊपर की रेंज को बोलते हैं हाई ऑन लोकेशन. हाई ऑन लोकेशन जब मार्केट है एज पर आपके वॉलिटिलिटी मार्कर्स, तो वहां पे नंबर 1 यू बुक प्रॉफिट ऑन योर एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स. नंबर 2, वहां पे कोई भी तेजी वाली स्ट्रेटेजी मत करो. बहुत बार हो सकता है एक दो दिन गलत जा सकते हो. High on location, look for a bearish strategies. Everybody clear? Now, based on your volatility, we have now decided on the location. This way, it is high on location. Give me a yes, everybody, if you have understood it. Yeah. Same way, जब market गिरता है, खराब होता है, you do the opposite. Then instead of high on location, it becomes नीचे वाला. Uh, the second one what we got, lower end of the range, low on location. लो ऑन लोकेशन पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो क्या उसका आप उल्टा करो, विच इज इंस्टेड ऑफ बाय फ्यूचर्स सेल फ्यूचर्स, इट इज बाय फ्यूचर्स. इंस्टेड ऑफ सेल कॉल, इट इज सेल पुट. यू कैन डू अ बुल पुट स्प्रेड. और यू कैन बाय अ कॉल. अभी समझ में आ रहा है सर? स्ट्रेटेजी हैज टू बी एज पर लोकेशन. कहीं भी कुछ भी सौदा नहीं खड़ा कर सकते आप. सो दिस इज फाउंडेशनल. उसके साथ we need more confirmatory tools. As you are all now connected, we do these sessions regularly, we talk of more. But सबसे पहले आप अपने विक्स से डेली रेंज डिसाइड कर लो. रेंज के बेस पे आप लोकेशन डिफाइन कर लो. चार्ट्स पे कौन सा मेरा हाई ऑन लोकेशन है और चार्ट्स पे कौन सा मेरा लो ऑन लोकेशन. अगर यही नहीं पता है तो आप ट्रेड क्या करोगे? तो सारा ट्रेड आपके अंदाज में होते हैं. कहीं भी कॉल ले लिया, पुट ले लिया, फ्यूचर्स ले लिया, कहीं भी स्प्रेड कर दिया. यू आर गेटिंग माय पॉइंट? if the daily range is clear, everybody give me a yes, we can move next. See, your strategy will work as per the location. अगर high on location पे आप कॉल ले लोगे या तो फिर बाय कर लोगे फ्यूचर्स और वहां पे गलत, वहां पे कहीं बेयर स्प्रेड कर लोगे बुल पुट, लॉस हो जाएगा. योर स्टॉप लॉस विल बी ट्रिगर्ड. Location is everything when it comes to short term trading. So I'll take a 60 seconds, 1 minute pause. My co-instructor along with me, Deepak ji, has a poll. Yes, Deepak ji, you can make the poll live, sir. Yes, Deepak ji, the poll has ended, sir. Okay. So I have a question. Anand says, sir, can we sell call at location and buy 100 points above and sell? Absolutely. Uh, Remove colon between sell and futures and also between buy. Uh, it's okay, sir. देखने वाला समझ जाएगा. When we are speaking and writing, थोड़ा बहुत ये हो सकता है. Okay. If you have understood, that's great, sir. So now I remove it. अभी हम weekly में जाते हैं. अभी मैं weekly price charts पे जा रहा हूँ. अभी मैं daily पे जा रहा हूँ. Right?
देखिए आपने देखा निफ्टी गिर रहा था, यहां से गिरा, चलो यहां तक आया, फिर यहां से यहां तक क्यों कंटिन्यू नहीं किया? ओके, बीच में क्यों रुक गया? फाइन, दिस इज वेयर योर वीकली वोलेटाइल रेंज कम्स इनटू पिक्चर। ये हम फ्राइडे के क्लोज पे ये वीक का रेंज निकालते हैं, उसमें भी लो ऑन लोकेशन और हाई ऑन लोकेशन रहता है। So let us see what the closing was on Friday. आज sorry on yeah 14 तारीख, 14 का क्लोजिंग क्या था निफ्टी का? So the closing on 14th was 24366. So I will write it down, 24366. So same way you have to do on Nifty, I think kuch okay. So will you now able to do it? I think ये कॉलम में अभी मैं कुछ कर रहा था तो उसमें something has happened, it's not allowing me. Let's see. Action side, we are there. Deepak ji, are we live, sir? Yeah, I'll wait for my co-instructor. Yeah, are we good to go live, sir? There was some connection issue. Okay. So 1 week volatility में फिर से आपको इंडिया विक्स लेना है. So इंडिया विक्स में 17th का ले लेता हूँ, which was, now we are doing it for this thing, August. Friday 14th था, 14th का. So let me see what the VIX was on 14th. So the VIX on 14th was 11.30. So मैं लिख लूंगा 11.30. Fine. Now this is a weekly. So यहाँ पे square root of 50 लेते. You know why square root of 50 लेते? Because in a year there are 50 approximately trading weeks. Okay, it remains same. So India VIX square root of 252. So now all you have to do is change Nifty. तो मैं निफ्टी 14 तारीख की ले लेता हूँ, 14th की. So closing was 24366. 24366. So now what I got the weekly range for Nifty. This is square root of 50. I guess कुछ formula में I think some goof up is happening. So let me now close this without saving, because somebody asked, so I just gave, because in my sheet it's showing absolutely fine. So once again I'll open it. You can edit this part, Deepak ji. So this way I'll update and give you the sheet. Will you all be able to do the same over here? Give me yes or a no. Okay. And see, I have done one for you. I expect आपको कुछ करना नहीं है, जहाँ पे येलो मार्किंग है सिर्फ विक्स चेंज करना है और आपको निफ्टी रेंज करना, तो आपको ये दो रेंज आ जाएगी. So this will be your range for the week. So on this basis, on VIX, this is how we calculate the
this thing. Range for daily and weekly based on VIX index. See, when I did it, I think somebody goofed up with my formula when I was giving to design the slide. That's why yellow marking chali gayi hai. But I think now you'll all be able to do it. I'll give you the sheet, right? Because it's yeah, all the columns are same. Now, the second way of doing it is based on what we call straddle price. What is a straddle price? Straddle price जो रहती है वो ATM कॉल प्लस ATM पुट रहती है. Premium of ATM call plus premium of ATM put is called a straddle price. अभी जाके हम देखते हैं. So I'll go to my platform now, Insta Options. So कल का निफ्टी अगर मैं देखूं तो कल का क्लोजिंग था 24078. So 24,100 का जो भाव था वो स्ट्रैडल प्राइस था. और लेट मी डू इट टुडे. आज का क्लोजिंग है 24,231. सो 24,250 का जो स्ट्राइक है वो आपका एटीएम है एट द मनी. सो स्ट्रैडल प्राइस मींस दैट यू टेक एट द मनी कॉल एंड एट द मनी पुट. सो अगर मैं ऑप्शन डेटा में जाता हूं, इफ आई क्लिक हियर निफ्टी एंड इफ आई टेक दिस इज द स्ट्रैडल प्राइस. तो स्ट्रैडल प्राइस आपका कितना है? कॉल इज 119, पुट इज 76. तो आप 119 प्लस 76 ऐड कर दो. लेट मी डू दैट. So 119 plus 76. So the range which I get is 195. Everybody clear? Give me a yes. So based on today's close, I can draw the straddle price range 195 points above and below the current price. Please show how to mark a range. I'm doing it. Take this closing based on straddle price. Go up और 195 points ऊपर चले जाओ. So this is your straddle range on the upside. Right? Same thing you do on the downside. 195 points नीचे चले जाओ. So as per straddle price, this is your range, everybody. Got it now? और मोटा मोटी देखिए, कल भी अगर फ्राइडे को कल भी देखा रहता तो आपकी स्ट्रैडल प्राइस रेंज सेम रहेगी. Everybody clear? Give me a yes or a no. Yes. So देखिए आपको एक रेंज मिल गई. तो कोई भी रेंज रहता है ना, रेंज शोज एग्जैक्ट लाइन, हाई ऑन लोकेशन, ऑन लो ऑन लोकेशन. हाई ऑन लोकेशन अगर आता है तो एक बार तो आप बुलिश मत रहो. लो ऑन लोकेशन आता है तो अभी बेरिश मत रहो. इधर कुछ मत करो, नहीं समझ में आ रहा, बट उल्टा सौदा मत करो. एवरीबडी क्लियर? हाई ऑन लोकेशन, लो ऑन लोकेशन. सी नाउ ये एग्जैक्ट लाइन है. तो आई गेट अ क्वेश्चन, क्या हम उसके लिए वेट करें? आंसर इज नो. whenever it's a high on location, low on location, like जैसे हम support band बनाते, resistance band बनाते, create a band which is high on location and a band for low on location. तो आपको करना क्या है? All you have to go is Fibonacci retracement, take the retracement. right? जो lowest line है और highest line है वहां पे एक मार्किंग कर दो, स्ट्रेच कर दो. और जो Fibonacci ratios है उसमें आपको सिर्फ 4 रेशियोज लिखने हैं और मैं आपके लिए रखूंगा. सो 0.1 एंड देन 0.2, देन 0.80 और 1, और बाकी सारे रेशियोज निकाल दो फ्रॉम द लोकेशन पर्सपेक्टिव. अभी हम एक बैंड या रेंज क्रिएट कर रहे हैं. एवरीबडी क्लियर अबाउट दिस? ऑल यू कीप इज ओनली 4 रेशियोज. Please give me yes. 0, 0.2,
0.8 and 1. When it comes to location, हम divide कर रहे हैं उसको. So now if I stretch it on the right side, I'll remove the background. So अभी आपको range पता चल गई, which is this entire range is high on location. Exact line के लिए wait मत करो, otherwise बहुत बार miss हो जाएंगे trades आपके. Or this is low on location. Everybody now clear? Will you able to mark a band? Make them detail में कर रहा हूँ. So tomorrow when you are doing on your own, and once again please watch this recording. ये सब टेक्निकल चीज है, आप 2-4 बार देखोगे, नोट्स लोगे तो ही आपको समझ में आएगा. So everybody clear? Will you able to mark the location this way, high on location and low on location? Never ever location is one line on the upside or one line on the downside. कभी भी लोकेशन जो है ना, वो एक सिंगल लाइन ऊपर और सिंगल लाइन नीचे नहीं रहती है. उसको आपको एक जोन में डिवाइड करना पड़ता है. इन बिटवीन के जो जोन है, इसमें हम क्यों डिवाइड करते हैं? एज पर वोलेटिलिटी, यू नो, बिकॉज हाई ऑन लोकेशन, यहाँ पे आपको रिट्रेसमेंट ट्रेड्स मिलते हैं, which means either book profit on your existing long or price have retraced high on location near the support. तो यहाँ पे आप मंदी का सौदा या मंदी की स्ट्रेटेजी सोच सकते हो. If price has reached low on location, ऊपर से आप शॉर्ट हो तो एग्जिट कर जाओ. यहाँ पे आपको रिट्रेसमेंट लॉन्ग मिलते हैं. एवरीबडी नाउ क्लियर? रिट्रेसमेंट ट्रेड्स हम किसको बोलते हैं? Yes, no? Yeah, I'll wait for your thumbs up or a thumbs down. Yeah. In between जो रेंज रहती है ना, ये मोमेंटम की रेंज है. आप सुपर ट्रेंड के बेस पे ट्रेड करते हो या मोमेंटम के बेस पे ट्रेड करते हो, ब्रेकआउट के ट्रेड करते हो, फाइन. बट जब हाई ऑन लोकेशन आता है ना भाव, एक चीज आप ध्यान में रखो, यहाँ पे कोई भी बुलिश ब्रेकआउट मत लो. वो क्या 10-20 पॉइंट ऊपर जाएगा और फिर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर करवाएगा. नो ब्रेकआउट्स. अभी रेंज ऊपर क्या आएगी, क्या करोगे वहां पे? ब्रेकआउट लेंगे, 100 ट्रेड में से 2 चलेंगे, बट 98 स्टॉप आउट हो जाएंगे. नाउ यू अंडरस्टूड द रेलेवेंस ऑफ लोकेशन एवरीबडी? अगर नीचे आ गया, आपको लगता और मंदी होगी, हो सकता 100 में से 2 बार मार्केट लोकेशन तोड़ता है. नो ब्रेकआउट, मतलब कोई शॉर्ट ट्रेड यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेड नहीं लेना है. So now is it clear where you take retracement trades and where you take breakout trade? Because आपका जो ट्रेड का क्लासिफिकेशन है, ब्रेकआउट, रिट्रेसमेंट, मोमेंटम, वो अंदाज में सर कहीं भी ट्रेड मत डाल दो. Everything has to be based on location. So location is called, अभी मैं इसको थोड़ा चेंज कर रहा हूँ. See, we do this session in detail, so make sure you can forward this link to somebody who wants to learn trading. इसको ट्रेड लोकेशन बोलते हैं. ओके, इन बिटवीन इज योर मोमेंटम जोन. आप डेज हाई निकल गया, डेज लो टूट गया, एंड ऑल दो स्ट्रेटजीज व्हिच यू आर डूइंग कंटिन्यू, बट लोकेशन इज सुप्रीम, रिमेंबर दैट. सो आई थिंक, डू यू हैव अ क्वेश्चन? दीपक जी, आई थिंक आई हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन. Okay, Anand says, sir, using Wick, straddle and ATR, the range will come approximately the same. No, it will define the upper boundaries with a plus or minus 50 points. Sanjay says it is best to be done on Friday. Sanjay, for daily you'll have to do daily. Yeah, but for weekly you have to do on a Friday. So ये थी straddle price range. Okay, everybody clear on the straddle price range? डेली का रोज करना है. नाउ द वीकली स्टैडल प्राइस रेंज में थोड़ा कैच है. सो व्हाट इज द कैच? अगर आप वीकली मार्क करते हो तो ऐसा नहीं 5 दिन लो, तो निफ्टी क्लोजेस ऑन ट्यूसडे,
which is weekly expiry. Everybody clear? Give me yes. So straddle range for the week अगर आपको मार्क करनी है तो ट्यूसडे के दिन नेक्स्ट वीक एक्सपायरी का लेना. So which means what? If today is Tuesday, आज मार्केट क्लोज कर रहा है तो नेक्स्ट वीक का एटीएम लेना एंड दैट बिकम्स योर वीकली स्ट्रैडल प्राइस फॉर द वीक. हैव आई क्लियर्ड द डाउट संजय? यस नो? सो एट 3 o'clock 3 बजे you just take the next week straddle price. Give me a yes or a no if you have all understood this part. Yes. So which means that अभी मैं आपको practically करके दिखाता हूँ. So mark Tuesday was what date? 18th. So this was market on 18th. Okay. So based on 18th उस दिन की एक्सपायरी हो रही है तो पूरे वीक का स्ट्रैडल प्राइस जानने के लिए आपको भी नेक्स्ट वीक एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट्स देखने. ओके. सो एंड देन take the straddle price plus or minus. I'll do it for you, which is 18th को that week contract are expiring, so you take the contract which will now expire on 20 this thing. So we no, let me go to August. I think I am into wrong month. Yeah. So 25th expiry आपको लेनी है. Will you all able to do this? Daily का you just take the daily closing, but for the weekly expiry you take Tuesday when market is expire हो रहा है और अगला हफ्ते का कॉन्ट्रैक्ट का स्ट्रैडल प्राइस लेना, वो आपकी वीकली रेंज हो जाएगी. ओके. या एवरीबडी हैज गिवन मी यस. Sanjay, is it clear? This was your question. It is best done on Friday. No, for weekly range, it is always to be done on a Tuesday with the next week expiry straddle price, ATM. Fine. Yeah. Now, and the third technique for this is based on price action, which is called ATR. So ATR is already plotted. बेस्ड ऑन एटीआर हमें देखना है कि मार्केट ऊपर कितना जाएगा और नीचे कितना जाएगा. So now ATR is a measure of days volatility if it's a daily ATR, weeks volatility if it's a weekly ATR, months volatility if it is a monthly ATR. Right? So now for this I'll take you to trading view. So now if I go on Nifty, can I do this for stocks? Absolutely, you can do this for stocks. So now this is Nifty. अगर मैं इंडिकेटर में जाके if I plot the ATR, average true range, how much it is showing? 182. So which says that the probability move of Nifty on the upside and on the downside extreme अगर बोले तो 182 पॉइंट का. Got it everybody? Now let us see what was ATR yesterday. It was 180 points. Now straddle price भी दिखा रहा था. अगर मैं कल के क्लोजिंग से 180 पॉइंट ऊपर जाता हूं, so did you see Nifty today did what? Touched 1 ATR on the upside. Now you got it why the range are important. Give me a yes or a no. आपको एक चीज समझना है, अगर भाव ऊपर जाने के बाद जब आप तेजी में आते हो तब आपको तेजी में नहीं आना, वहां तो अभी तेजी उस दिन के लिए खत्म हो रही है, हाई ऑन लोकेशन है. और अगर मैं चार्ट को वीकली कर दूं, सो वीकली एटीआर इज हाउ मच? 605. अभी मैं निफ्टी अगर देखने जाओ कल लास्ट वीक के क्लोजिंग से, यहाँ पे फ्राइडे टू फ्राइडे करना एटीआर 600 पॉइंट था. ये वीक अभी तक मार्केट कहां पे है? 343 पॉइंट्स. गेटिंग माय पॉइंट एवरीबॉडी? ऊपर जाता तो कितना जाता?
अकॉर्डिंगली 604 पॉइंट्स। वीकली एटीआर बहुत रेयर है टूटने में। देखिए जब बहुत ही खराब वीक आता है, जैसे ये रेड कैंडल है, यहाँ पे एटीआर कितना था 659 पॉइंट्स का। तो यहाँ पे निफ्टी गिरा कितना, अब गिरा एंड इट क्लोज टू अराउंड दिस लेवल, करीब करीब एटीआर के इक्वल मूव आया। नाउ यू getting it everybody, why it's so important? Now to daily ATR you don't have to calculate, weekly आपको calculate करना पड़ेगा। okay, daily you don't have to calculate, weekly आपको calculate करना पड़ेगा। now you go to your trading view, go to indicator, over here type daily ATR lines। अगर मैं डेली आर एटीआर लाइंस करता हूं तो इसमें आता है डेली एटीआर लाइंस बाय इन्वेस्ट टोरिटो, नंबर इज 246। एवरीबॉडी नोटेड इट डाउन, daily ATR lines and the author is Invest Torito and number is 246. Give me a yes. I'll wait. Yes. All you have to add it as your favorite and click it. अगर मैं 15 मिनट के चार्ट्स पे जाता हूं तो मार्केट आज कहां तक गया, अभी 4-5 दिन देख लेते हैं। जब वोलेटिलिटी बहुत हाई है, गैप अप खुला, इट वेंट टिल व्हाट 1 एटीआर ऑन द अपसाइड। देखिए यहाँ पे आपका विक्स का, नाउ आनंद योर क्वेश्चन, मिस्टर आनंद सहाय, you had the range from your VIX daily, you had range from your daily ATR. Had it gone down, this was low on location. So देखिए ये by 9:16 it gets updated on a daily basis। मेरे चार्ट पे ATR रहता है। So if you see hardly इस दिन जब मार्केट खुल के जोर से नीचे आया था, see कहां तक नीचे आया, till 1 ATR on the downside। Everybody clear about this part? Give me a yes or a no. Yes. Now see ATR को भी मैं क्या करता हूँ ना, there might be days which are volatile, there might be days which are quiet, right? जैसे इस दिन है, तो इसको हम भी ऑलवेज रेंज को, लोकेशन को हाई ऑन लोकेशन और लो ऑन लोकेशन डिजाइन कर देते। so this is like this, right? इस तरह क्यों आ रहा? सो नाउ यू सी, जब मार्केट नीचे आया था, अगर आप 1 एटीआर के लिए वेट करते तो ट्रेड मिस हो जाता। अभी यहाँ पे जिसने मंदी की, लो ऑन लोकेशन, सार सबके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। नाउ यू आर गेटिंग इट, व्हाई वी नीड द लोकेशन based on volatility studies, which is the topic for the day. Everybody clear about this? See volatility expansion एक साइड होती है ना, दोनों साइड की तो रेंज नहीं आएंगे ना। If you have understood, give me a yes everybody. Yeah. And this is high on location, उस दिन लो ऑन लोकेशन था, आज आप देखो तो मार्केट वाज हाई ऑन लोकेशन। अभी मैं हटा के आज यहाँ पे डाल देता हूँ, जिसने खुलने के बाद तेजी की उसके पैसे नहीं बने ना आज, अदर देन अ स्मॉल लिटिल ब्रेकआउट। सो व्हाट हैपेंड इज मार्केट स्ट्रेट ऑन ओपन हाई ऑन लोकेशन और क्लोज भी उधर ही हो गया। तो खुलते आपको पता था, एज अ डे ट्रेडर आपके लिए बहुत कुछ है नहीं, या एग्जैक्ट यहाँ के लिए वेट करते, रेजिस्टेंस मिलाते, तो इट वुड हैव वर्कड ऑन योर फेवर। लेट अस गो एंड चेक यस्टरडे। कल भी देखो मार्केट कहाँ पे आया था, लो ऑन लोकेशन, high on location. Now, will you able to define the volatility range on yourself as a trader? That was the purpose of today's session. Anand says for weekly, we should define range on Tuesday at 3 p.m. based on the technical. No, when it comes to ATR, it's Friday to Friday, only straddle price, take 3 p.m. Tuesday for the next week expiry. Yes. Deepak ji, you can launch the second poll, sir. Yes, Deepak ji. Have you attended our previous algo sessions? Anybody? See why we are doing these sessions, because I'll keep it a suspense now.
Okay. No, I didn't. See, 77% says they don't. सर अगर आप रेगुलर सेशंस में नहीं आओगे, हाउ यू आर गोइंग टू अपडेट योर नॉलेज, अपस्किल योरसेल्फ इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रेडिंग एंड टेक योर ट्रेडिंग टू द नेक्स्ट लेवल? बी रेगुलर. दैट्स ऑल आई वुड लाइक टू से. ओके. यस दीपक जी. डू लोकेशन वॉलेटिलिटी बेक्स. सी, कोई भी चीज लक्ष्मण रेखा तो नहीं हो सकती ना ट्रेडिंग में. There are times where it breaks, but I have observed it's not more than 6 to 7% of the time. अगर आप पहले आज एटीआर डाल के देखो डेली में, फिर वीकली का फॉर्मूला अप्लाई करो, कितने दिन टूटा यहाँ पे? ओनली वन डे आई कैन सी ओवर हियर. लेट मी मार्क. कुछ नेगेटिव न्यूज होगा, ट्रम्प का ट्वीट होगा, एंड सी लेवल्स break on the upside or a downside if there is some very strong influence, either negative or positive, which is outside the markets. Got it, everybody? Otherwise, are you seeing every day's volatility is contained within the ATR bands? So today you have learned, or the VIX daily band. मैं तो क्या तीनों प्लॉट करके रख देता हूँ, ज्यादा फर्क नहीं आता, 25-50 पॉइंट का फर्क आता, बट आई वांट टू बी माय स्टॉप लॉस एट अ वेरी सेफ लेवल. ऐसा नहीं है मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, फिर 10 पॉइंट ऊपर गया एंड देन द टारगेट केप. नो. द सेम थिंग मैं आज बैंक निफ्टी में भी दिखाता हूँ आपको. तो बैंक निफ्टी 180 तक नहीं गया था, बट टिल वेयर इट वेंट एंड फ्रॉम वेयर इट क्रैक्ड. देखिए अगर मैं बैंक निफ्टी यहाँ पे देखता हूँ, भाई इट वेंट टिल हाई ऑन लोकेशन. अबे यहाँ पे कोई तेजी कर लो तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क ना मेजोरिटी ऑफ द टाइम. और वहीं से अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी नीचे आया. एवरीबडी नाउ क्लियर अबाउट दिस? और कल का अगर आप देखो ना बैंक निफ्टी, तो लो ऑन लोकेशन नहीं आया था. सो देखिए वॉलेटिलिटी स्टडीज कब काम में आएगी? व्हेन देयर इज अ वेरी बिग वॉलेटिलिटी. एम आई राइट? व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग अ वॉलेटिलिटी. अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, वॉलेटिलिटी हाई है, गड़बड़ बहुत हो रहा है, पैनिक मत करो, रिलैक्स करो, वॉलेटिलिटी स्टडीज डाल के चार्ट पे ऑब्जर्व करो प्राइस एक्शन को. डज इट मेक सेंस एवरीबडी? वॉलेटिलिटी से घबराओ मत. आज आप सीख गए वॉलेटिलिटी मेजर कैसे करना, लेवल्स कैसे ड्रॉ करने डेली और वीकली बेसिस पे. आप करो सर. आज मार्केट गैप अप खुला और फिर अगर आप फंस जाते तो आज स्टॉप ट्रिगर हो जाता आपका बैंक निफ्टी का. आपको अगर लेवल पता है, ये हाई ऑन लोकेशन आ गया मार्केट, and there is a resistance also over here combining price action with the volatility part, there was a negative trade. Am I right? This is what. Yes, no? Yeah. So that's all about today's session. All the slides which I have discussed today, they will be uploaded on our YouTube, on our site. So I'll take you to Stocko. Go to Market Plus. In Market Plus, there's webinars and videos. यहाँ पे जब वीडियोस आते हैं ना वेबिनार्स के, तो then all the slides and everything is kept over here. Am I right, Deepak ji? You will find it, all your study materials note over here. So make sure you regularly visit the Market Pulse section. Okay. So how many of you watched the interview with Ashish Kyal? If you have not, please watch it. It was a lovely traders talk we had. So that's all from my side, friends. Thanks and have a nice day.